विरोधी कहाँ मिलेंगे? किसान विरोधी कहाँ मिलेंगे? इसलिए ट्रांसपेरेंट सरकार है, इसलिए मैं बिल को सपोर्ट करता हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों का ही नहीं, तो सम्मान, सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम भी मोदी जी ने किया है। वन रैंक वन पेंशन कितने सालों से था, वन रैंक वन पेंशन देने का काम मोदी जी ने किया है, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं, मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सिंह संधू, माननीय श्री सतनाम सिंह संधू जी। उप सभापति जी, मैं बिल के समर्थन वास्ते खड़ा होया, पर मैं अपनी गल अपनी माँ भाषा, अपनी माँ बोली पंजाबी विच रखनी चाहुंदा। ये बिल का जिहड़ा खर्चा है ये रेलवे नाल संबंधित है, वाधू खर्चा, और मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का तहे दिलों धन्नवाद करदा। मेरे को शब्द नहीं जिन्हां नाल धन्नवाद करा, क्योंकि इस बार सभापति जी 2026-27 विच पंजाब लई 5,673 करोड़ रुपए रेलवे की वंड की गई है, जो कि 2009 तो 14 की औसत नालों 25 गुणा ज़्यादा है। और मैं इस वास्ते प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री धन्नवाद करदा कि पंजाब नूं 25 गुणा ज़्यादा पूरे भारत विचों इस वाली रेलवे का बजट मिलिया, 5,673 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। उप सभापति जी, आंकड़े सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं दसदे, पंजाब प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वचनबद्धता का प्रमाण है। और सभापति जी, पंजाब की गल, किसान की गल कीती तो बिना अधूरी है। सिर्फ 7 महीनों में पंजाब विचों 95 लाख मीट्रिक टन तो वध कणक अते चौल 2,684 रेल रैਕਾਂ राਹੀਂ देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ तक पहुँचाए गए ਆ। ਇਹ सिर्फ माल ਢੋਆ ਢੁਆਈ नहीं, ये मंडी विचों किसान की फसल की समय सिर चुकाई ਅਤੇ पंजाब के अन्न ਨੂੰ देश की थाली तक पहुँचाने की जीवत रेखा है। ਅੱਜ पंजाब के 30 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, तो खुशी की गल है कि इस आधुनिकता विच साडी स्थानक विरासत, इतिहास और सभ्याचार को भी माण मिल रहा है। क्योंकि सभापति जी, ये उस पंजाब की धरती है जिथे सीस कट्टे गए पर सिदक नहीं टुटिया, सरबंस वार दिते पर असूल नहीं हारे। श्री आनंदपुर साहब की विरासत, श्री मुक्तसर साहब के 40 मुक्तियां की शहादत ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਲ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। साड़ी सरहद, साढ़े बॉर्डर पंजाब दे, वो साढ़े देश वास्ते बहुत अहम है। 764 करोड़ रुपए का फिरोजपुर पट्टी रेल लिंक देश की आज़ादी तो बाद टुटी एक अहम इतिहासक कनैक्टिविटी नूं मुड़ जोड़ रहा है। ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रेल की दूरी 196 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर तक लियांदी जा रही है। सरहदी पंजाब विच अजिही कनैक्टिविटी विकास लिए भी अहम है, तो साडियां रखिया लोड़ां ते सुरक्षा वास्ते भी अहम है। उप सभापति जी, जिस पंजाब ने देश नूं हरी क्रांति दिती, हुण उस पंजाब नूं संस्कृति लॉजिस्टिक निर्यात की लोड़ है। मैं अखीर विच एक गल जरूर कहनी चाहूँगा, क्योंकि रेल नाल संबंधित है। उप सभापति जी, जदों रेल की गल होंदी, जदों डबल इंजन लगता है तो रेल की स्पीड वध जाती है। अज लोड़ है पंजाब नूं कि असी डबल इंजन की रेल पंजाब नूं चले और पंजाब तरक्की की रफ्तार ते वजे। एक इंजन पंजाब का, एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। Sir, thank you very much, sir. I didn't think on a routine matter of excess grant for which we come for the appropriation expenditure undertaken not just this year or the year before, in the year 2023, the excess expenditure had happened and we have come for the appropriation before the House. We'll invoke so much of an interest in discussing, but it's very healthy that we have a discussion on such a finance-related subject. Normally, in fact, I was more telling
the Parliamentary Affairs Minister and also the leader here, Shri Dr. L. Murugan, that this is about expenditure of 2023, but the interest that the members have shown makes me feel very encouraged. So I would take this opportunity to just explain a few things with your indulgence, sir. Please. Sir, this is the demand for excess grant for expenditures undertaken in the year 2023 on just 2 counts. And these 2 counts were part of what the Public Accounts Committee in its 39th report presented to the Lok Sabha this year in April. So Public Accounts Committee, as you know and the honorable members know, is headed always by a leader from the opposition. So in his chairmanship, that entire committee looks into the accounts and identifies where any excess has happened. So this year in April 26, this particular or this pair of 2 excess expenditure which had happened in 2023 was highlighted. One such excess demand arises out of a particular court order which was on the Railway Ministry, and that was for 196.44 crore under the grant number 85, which is railways. That's a small, lesser amount. But the larger amount is for 53,871, which is on grant number 40, which is repayment of debt, mainly on account of, in the cash management, sir, when withdrawal of investments in the intermediary 14-day bills happen, as a result of which these withdrawals happen by the state governments which put money into the T-bills. So government overestimated these amounts, exchange rate variations and changes in accounting classifications all resulted in this 53,871. What is very important to know about this second one, the 53,000 and not about the railway 196 is, it is in the nature of debt receipts, which are all netted out, sir, against the issuance of securities. And therefore, it has no fiscal impact as it is. So they are netted out, and as a result, that netting out is being identified, and that netting out is done in a proper fashion in order that it doesn't stand out as not adjusted. So both are all on the capital charge sections of their respective demands. So this being so, the implication, fiscal implication is not severe of that year. However, sir, I want to say this is not the first time. I was replying to honorable member also. We have come, Government of India has a practice of coming to the House because it has to get the appropriation cleared by the House whenever these excess demands happen. We have come here in 2019-20 for a budget matter related to 2019-20 budget and sought an approval for an excess grant on an expenditure undertaken for 52,637 rupees, 37 crore rupees, 52,637.78 crore rupees, which I came here for approval in December 2022, one time at that time for excess expenditure. Another time related to the budget of 2020-21, for which we came in December 23 for appropriation on an excess expenditure, and that time the amount was for 1,18,651.04 crore, and that related to the 2021 budget. Appropriation, we came here in December 2023. Again, related to 2021-22 budget for an amount of 1,291.31 crore, and for which I came here for appropriation in March 2025. So now on a budget related to 2023 excess demand, we have come here for seeking approval, sir. So it was interesting when I heard the member from J&K speaking about how we have to
take care of J&K and support them on some of the expenditures that they are overburdened with. I would like to take this opportunity to inform the August House, sir, that J&K, when particularly it was under the central administration for a few years after 2019, only yesterday we celebrated 7 years of having removed Article 370. Having removed Article 370 in 2019, J&K was under the central administration till such a time the elected government came to power. But during that time, I would like to thank the Home Minister and the Prime Minister for having helped and guided me in clearing up very many overhangs which J&K suffered from. We took a very, very liberal view because, I don't want to say this as if I'm patronizing, but we wanted genuinely to get the health of, the financial health of, the fiscal health of J&K properly before the elected government came to power. So literally so much time went in granular details being studied by both Home Ministry and the Finance Ministry. I would like to highlight just two things which are of very big significance that we have done for J&K, and we have done it because we strongly believe, and this House has also passed resolution, that Article 370 getting abrogated also proves the point. Since J&K is an integral part of India, inclusive of those which are occupied by Pakistan illegally, we will ensure that the people of J&K are supported and taken care of because we are all part of one country. And therefore, what we took at that time, I just wish to highlight, Honorable Member is not here, but I would have liked him to hear it. J&K police, entire J&K's police, their salary and their pension is now being met by Government of India on an annual basis. That means approximately 13,000 crores per annum is being spent on the police of and their salaries and pension of J&K. Second, sir, during that time when the central administration was taking care, we have helped restructure the entire J&K debt. The Union Territory of J&K, we took care of restructuring it, and we had to, because the division happened of J&K and Ladakh, we repaid all the debt which Ladakh Union Territory had because the resources reallocation took place, and they were left with quite a lot of money which had to be paid back. We have paid back that entire thing of Ladakh and taken care of readjusting, restructuring J&K's debt. Also, sir, for the year 24-25 and for the year 25-26, an additional amount of 5,000 crore each year has been given over and above the revised estimates of their budgets, just to make sure the urgent requirements of J&K administration is not left without anybody supporting them. So each year, over and above their RE, we have given 5,000 crores to J&K, and I wish to assure the people of J&K, every such attention will be given because we want J&K to prosper along with the rest of the other states. So we will be giving that attention. Even more, sir, just two more points on J&K. The power projects of J&K, around 1,350 crores has been given, and this was provided since 2021-22 to support Khiru, Ratle and Kwar projects, all three of them hydel power projects. We have given them the support. That's the total amount, 1,350 crores. And again, since 25-26, which is the last year, we are into 26-27, to support capital asset creation in J&K, a sum of 5,166.50 crores has been provided through the SASCI. Normally, SASCI is given to states with elected houses. So is J&K getting
because it's also a union territory with an elected house. They are getting under the 50-year interest-free, which we give in the name of special assistance to states for capital investment. 5,166.5 crores has been given to J&K. So we are actually addressing the issues of J&K. This year, sir, for 26-27, the same SASKI 50-year interest-free amount for J&K, 1,407 crores has been provided in the untied component, and 4,886 crore can be claimed if conditions under the reforms components are met by the Union Territory of J&K. So for every state we give tied component and untied component. Untied component goes anyway based on the proposals. Tied components go on the basis of reforms that they undertake. So J&K still has more than 4,886 crores if they can utilize through, am I right? Yes, sir, 4,886 crore that they can claim if they undertake reforms, in addition to the untied that they will get. So these were some of the specific points that I wanted to address to some of the members, sir. Honorable Member Sanjay Singh spoke about the need for such excesses in respect of education, health, human resource development, and so on. Debt contracted by Government of India, we will have to clear, sir. But all this is for all purpose. It's not as if we entertain excess demand only because it is for some court order or it's because it is going for some payment. If it is arising out of health and education, we will honor it. So it's not as if I've tailor-made it only to take care of others and not education. Let Honorable Member see the difference here that I'd like to request him to appreciate, that it is post a Public Accounts Committee looking at where it has happened and we come back. It's not a head of item under which I'm coming and saying give it only for this and not for education. If the excess demand arises out of education, I'll come before the House. So that I just want to give the clarification, sir. With all this said, I would humbly submit that if this can be passed in this House. Thank you very much. Honorable members, the question is that the appropriation number 3 Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the schedule stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharamanji to move that the bill be returned. So I rise to say that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Special mentions. श्रीमान अशोक राव शंकर राव चौहान जी नॉट प्रेजेंट. श्रीमान संजय सिंह जी. धन्यवाद महोदय, आपने मुझे स्पेशल मेंशन में देश के सर्वेयर्स की इंश्योरेंस सर्वेयर्स का मुद्दा उठाने का मौका दिया. सर, I seek to draw attention of the government to certain provisions in the exposure draft of the Insurance Regulatory and Development Authority of India
Third Amendment, Regulation 2026, Section 64 UM of the Insurance Act 1938 expressly requires that no person shall act as a surveyor or loss assessor unless he or she is a inter alia a member of the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors, the statutory professional body recognized by the Parliament. The draft regulations, however, propose that the authority may grant registration even without IISLA membership and deem such registration to satisfy Section 64 UM. They also retain provisions empowering the authority to decide appeals against IISLA membership decisions. These provisions raise an important legal issue as to whether delegated legislation under Section 114A can override or dilute a statutory requirement enacted by Parliament. The regulation making power appears confined to prescribing qualifications, code of conduct, and related matters, not modifying the mandatory requirement of IISLA membership. Surveyors play a vital role in determining insurance claims affecting millions of policy holders. Diluting statutory safeguards may adversely affect professional accountability and consumer protection. I therefore urge the government to examine the legality of those proposed provisions and ensure that the final regulations remain fully consistent with the Insurance Act 1938 and the intent of Parliament. Thank you very much. Sri Y.B. Subba Reddy. Sir, this is concern over distress faced by the tobacco farmers in the state of Andhra Pradesh. Sir. The price crash in tobacco has pushed thousands of farmers in Andhra Pradesh into financial distress. Sir. As one of India's tobacco growing state, fastest growing tobacco states in Andhra Pradesh has many farmers dependent on tobacco cultivation. Sir. Tobacco has, that fetched 460 rupees per kg last season, now selling at just below 260 rupees. Sir. A decline of almost 200 per kg. After 100 auction days in 25-26 season, the highest price has not been even to 250 rupees per kg. Sir. Companies gave procurement index for 142 million kgs against production of 232 million kgs, sir, resulting in slower procurement and prices. The auction price declined from 237 per kg on 25th May to 227 per kg 15th June 2026. Sir. Nearly 40% of the tobacco bales are being rejected with rejection rates in southern black soil centers ranging from 28 to 38%. Sir. Each rejected bale costs farmers 2,000 rupees per transportation. While the government earns nearly 1 lakh crore from tobacco revenues, the farmers who cultivate crops are not getting fair returns. Sir. I argue the government to review auction practices and ensure procurement commitments are aligned with the production estimates, prevent arbitrary rejection of quality grades, ensure remunerative prices, and provide market intervention. With this, I'll conclude, sir. Thank you, sir. धन्यवाद. श्री सी सदानंदन मास्टर. श्री सी सदानंदन मास्टर. Sir. डॉक्टर एम धनपाल. बोले. अच्छा, आप उधर से वहां चले गए. ठीक. Honorable Chairman, sir, I seek to draw the attention of the government to the tragic death of Ms. Savariya Basant, a young MBBS student from Haripad, Kerala, who was studying at Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan, on 7th of last month, sir. She left India with the dream of becoming a doctor. Tragically, she returned home in a coffin. According to reports, she was allegedly murdered by her classmate, who has been arrested by Uzbek authorities. The victim's family has alleged that she was repeatedly pressured
to convert her religion before the incident. These allegations deserve a comprehensive, impartial, and time-bound investigation. I believe this may not be an isolated event. I urge the government to investigate whether the educational consultancy or recruiting agency that facilitated her admission to Uzbekistan had any role or links, if any, with any organized network. If any conspiracy involving coercion, exploitation, or unlawful religious conversion is established, those responsible must be brought to justice. Similar allegations have been raised in several cases from Kerala, sir, over the years. Such allegations deserve a fair and evidence-based investigation. This is not merely a death of a young woman, sir. It reminds us that the safety, dignity, and freedom of every girl and woman must be protected. There should never be another Savaria from Kerala or from any other part of India. As our civilization teaches through Vasudhaiva Kudumbakam, the whole world is one family, and every citizen has the constitutional right to practice and profess a religion of their choice. Thank you, sir. धन्यवाद. श्री डॉक्टर एम धनपाल. Honorable Vice Chairman, sir, I rise to draw the attention of this August House concerning over the elected representatives abandoning the political party. Sir, people elect representatives based on the ideology, policies, and programs of a political party. However, instances have occurred where persons selected on the ticket of a party, after taking oath, resign, leave the party, join another political party, and seek to contest elections on the ticket of the new party during the same term. Such practices weaken the faith of voters in the electoral system. Persons who secure the mandate of the people on the ticket of one party and subsequently join another party should not be permitted to contest elections from the new party during the remaining term of the original mandate. This would prevent unnecessary expenditure from the public's exchequer and avoid confusion among voters due to political shifts. Sir, allowing such persons to seek another electoral mandate during the same term amounts to a mockery of democracy and undermines the public trust. Sir, therefore, I urge the government to consider suitable amendments to the Representation of the People Act 1951 and the relevant provisions of the Constitution to provide restrictions in such cases and protect the sanctity of the people's mandate. Thank you, sir. धन्यवाद. डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता. माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद. मैं सरकार का ध्यान बिहार की एक अत्यंत गंभीर, संवेदनशील एवं वर्षों से चली आ रही समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ. बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि राज्य का एक बड़ा भाग प्रत्येक वर्ष बाढ़ और नदी कटाव की विभीषिका झेलने के लिए विवश हो जाता है. यह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं राज्य के समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है. बिहार की कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, अधवारा समूह की नदियां तथा गंगा सहित अनेक नदियां प्रतिवर्ष मानसून के दौरान उफान पर आ जाती हैं. इससे अधिकांश नदियों का उद्गम नेपाल के हिमालयी पर्वत
क्षेत्र में होने के कारण वहां होने वाली भारी वर्षा का सीधा प्रभाव बिहार पर पड़ता है। सीमा पार जल प्रवाह, अत्यधिक गाद का जमाव, नदी तल का ऊंचा होना तथा जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था बाढ़ की समस्या को और अधिक गंभीर बना देती है। विशेष रूप से उत्तर बिहार के अनेक जिले जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया सहित अनेक क्षेत्रों के लाखों लोग हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी का सामना करते हैं। कई स्थानों पर नदी कटाव इतनी तेजी से होता है कि लोगों की पुश्तैनी भूमि, मकान, विद्यालय, सड़कें और सार्वजनिक संपत्तियां देखते नदी में समा जाती हैं। बाढ़ का प्रभाव केवल कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहता, इसके दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं। अतः मेरी सरकार से यही मांग है कि इस बाढ़ की विभीषिका के ठोस निदान पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय वाइस चेयरमैन साहब। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग से उत्पन्न जो आक्रोश, जो शिकायत और जो विसंगतियां हैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सो द 45,000 crore केन बेतवा river linking project, probably India's first river interlinking project, has been envisaged to address chronic water scarcity in Bundelkhand. However, its implementation has triggered widespread protests by affected tribal communities, particularly the Gond and Kol tribes. So, tribal men and women have been staging peaceful demonstrations, including symbolic funeral pyre protests, expressing fears of displacement and the loss of ancestral lands, forests, and livelihoods. Sir. The protesting communities state that the acquisition of their land and restrictions on access to forests have disrupted their traditional way of life and dependence on forest resources. Although the government has announced a rehabilitation and resettlement package, under the land acquisition framework, affected communities allege that many eligible families have received only nominal compensation and are yet to receive meaningful rehabilitation. They have also alleged serious irregularities in the implementation of the package, warranting an independent verification of compensation and rehabilitation payments. So, I urge the government to look into the legal status of all environmental, forest, and wildlife clearances, the status of displacement, compensation and rehabilitation, irregularities in rehabilitation, compliance with the Forest Rights Act 2006, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 and other applicable laws, and to initiate meaningful dialogue with the affected Adivasi communities. That is much needed. Jai Hind, sir. Thank you so much. धन्यवाद। श्री मोहम्मद नदीमुल हक, not present. डॉक्टर कल्पना सेनी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं राष्ट्र हित से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में दान की समृद्ध परंपरा रही है। लोग धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से योगदान देते हैं। इसी भावना को राष्ट्र हित से जोड़ते हुए मेरा सुझाव है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राहत कोष की तर्ज पर
एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय रक्षा योजना को योगदान कोष स्थापित करे, जिसमें देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से योगदान दे सके। मेरा सुझाव है कि इस कोष की राशि का उपयोग केवल रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों, स्वदेशी रक्षा उत्पादन तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए किया जाए। यद्यपि राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, परंतु देश का आम नागरिक भी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयासों में अपनी सहभागिता देना चाहता है। यह सुझाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना से प्रेरित है और करोड़ों देशवासियों को उस इच्छा को अभिव्यक्त करता है जो भारत को सामरिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने में अपना स्वैच्छिक योगदान देना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि ये पहल जनभागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के संकल्प को और गति प्रदान करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती सुलता देव। धन्यवाद। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मुझे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे यंग बच्चे होते हैं वो किस तरह से मॉल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, किस हाजरस सिचुएशन में, इसके लिए बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं सरकार का ध्यान मॉल एवं बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत युवा के कठिन परिस्थितियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत युवतियों की प्रतिदिन 8 से 10 घंटे लगातार खड़े होकर काम करना पड़ता है। अधिकांश स्थानों पर बैठने या विश्राम की उचित व्यवस्था नहीं होती। इसके कारण कम उम्र में उन्हें कमर दर्द, थकान, पैरों में सूजन तथा सर्वाइकल जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त कोई संस्थाओं पर स्वच्छ रेस्टरूम, सुरक्षित विश्राम स्थल और नियमित ब्रेक की सुविधा का अभाव है, जो विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य और गरिमा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये स्थिति उनके कार्यस्थल पर सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण को अधिकार के विपरीत है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि मॉल एवं रिटेल क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ रेस्टरूम, सुरक्षित विश्राम स्थल, नियमित ब्रेक और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही इन प्रावधानों के पालन हेतु सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी। श्री लहर सिंह सिरोया। धन्यवाद उपसभापति महोदय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आपने अनुमति दी है कि जिसमें करोड़ों रुपया इसमें जाया हो रहा है सही वेलफेयर लिस्ट नहीं होने की वजह से। ए नीड for standard and continuous verification protocol to keep the list of welfare beneficiaries clean. Honorable Vice Chairman Sir, the government of Karnataka had introduced many guarantee schemes when they came to power in 2023. Although they were a huge burden on the exchequers, they went ahead with them. The traditional welfare budget of the government was diverted and allocation of various departments were curtailed because they needed money for the guarantee schemes. Vice Chairman Sir, however now, 3 years after the guarantee scheme started running, the CAG report has pointed out that in particular scheme, Grah Lakshmi, in which women were being given rupees 2,000 every month, nearly rupees 225 crores was transferred to accounts of dead beneficiaries. Either the government has failed to scrutinize the beneficiary list properly, or this was a deliberate act. Chairman, Vice Chairman, sir, the irony is that the state government which contested the CAG figures said only about 115 crores mistakenly went to the 1,08,755 dead beneficiaries, and the rest was exaggeration. They have tried to various other methods to bring down the numbers, but they have only ended contradicting themselves.
this particular episode and many such they lay buried should tell us about the importance of creating a foolproof list of welfare beneficiaries. The opposition has been objecting to the Election Commission's SIR process, but this guarantee-related episodes should pressure up to the urgently clean up both voter list and welfare list. Can the central government create a share with all state governments a standard of continuous verification protocol for maintaining the sanctity of beneficiary list? This will save the nation billions of rupees. जो approved text है वही पढ़ें। हाँ सर ये सर नहीं जो approved है टेक्स्ट जो आपको भेजा गया है वही पढ़ें। सॉरी पढ़ लिया दोबारा पढ़ लो पूरा कर दीजिए। हाँ सर द गवर्नमेंट ऑफ चलिए हो गया आपका धन्यवाद जी सर हो गया धन्यवाद। डॉक्टर जॉन बिटास नोट प्रेजेंट। श्री नरेश बंसल धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे पर्यटन के एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर दिया है। डिमांड फॉर स्पेशल ट्रेन फ्रॉम देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार टू श्री सोमनाथ जी, श्री खाटू श्याम जी एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। देवभूमि उत्तराखंड तीर्थाटन एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। यहाँ रोज भारी संख्या में यात्री आते हैं। वह यहाँ से अन्य सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हैं। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से श्री सोमनाथ मंदिर, पुष्कर तीर्थ, खाटू श्याम जी, माउंट आबू आदि स्थानों के लिए स्पेशल व आम श्रेणी की ट्रेन चलाई जाए, जिससे यात्रियों को रेल सेवा के अभाव में हो रही दिक्कतें दूर हों। उन्हें यात्रा हेतु समय पर ट्रेन का आरक्षण मिल सके, जिससे मुख्य तौर पर दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगे। अतः मैं सरकार से एक बार पुनः मांग करता हूं कि इन प्रमुख तीर्थ स्थानों से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार हेतु नियमित रूप से एक स्पेशल एवं एक साधारण श्रेणी की ट्रेन का संचालन किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद बंसल साहब। श्री एल के सुधीश। Honorable Deputy Chairman, sir, on behalf of Desiya Murpoku Dravida Kalagam, Vice Chairman, Honorable Vice Chairman, on behalf of Desiya Murpoku Dravida Kalagam, a dynamic woman leader in Tamil Nadu, Srimati Premalata Vijayakant leadership, I rise to speak about the growing drug problem in India, especially its impact on the youth. Drug and district to the life of many young people. They are affecting their health and education, family and their future. This is not only a law and order issue, it is a national challenge. I request the central and state government to work together to stop the drug traffic. We need to strongly action drug dealers and strictly punishment for those who sell drugs. Please read approved text. You are not reading approved text. Yeah. Sir, that is very small, sir. It is very small to read for me. That's why I take it myself. You read that only. It's very small. Maybe. Okay, sir. Thank you. Dr. Ramarao Sakaram Budkute. Thank you, Vice Chairman Sahab, to giving me chance to demand for scientific and geological survey of earthquake-prone areas in Hingoli district of Maharashtra. मैं महाराष्ट्र से हिंगोली जिले के पांगरा शिंदे एवं अन्य स्थलों से समय समय पर महसूस किए गए जाने वाले भूकंप के झटकों तथा उनसे उत्पन्न संभावित खतरे की और
सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बिना किसी पूर्व सूचना के आती है और जन धन की भारी हानि के कारण बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग के मन में भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इसलिए केवल आपदा आने के बाद राहत कार्य करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पहले से ही प्रभावी तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हिंगोली जिले में भूकंप संभावित क्षेत्रों का विस्तृत वैज्ञानिक एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाए, अत्याधुनिक भूकंपीय निगरानी केंद्र स्थापित किया जाए तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। स्कूलों को, अस्पतालों को, ग्राम पंचायत भवनों को एवं अन्य सार्वजनिक भवनों को सुरक्षा ऑडिट कर उन्हें भूकंप विरोधी मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाए। प्रत्येक गांव में नियमित आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल आयोजित किया जाए। नागरिकों को प्राथमिक उपचार एवं सुरक्षित निकासी का प्रशिक्षण दिया जाए तथा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। यदि भविष्य में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रभावित परिवारों के लिए त्वरित राहत, उचित मुआवजा और पुनर्वसन के प्रभावी व्यवस्था की सुनिश्चित किया जाए। मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि पांगरा शिंदे सहित हिंगोली जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर आवश्यक वित्तीय तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। थैंक यू। धन्यवाद। श्रीमती राजा थी प्रेजेंट। श्री विनोद श्रीधर तावड़े सर, here only. बोले बोले। Yes, sir. According to a systematic review of more than 60 studies that focused on the prevalence of postpartum depression in Indian mothers, it was revealed that nearly 1 in 4 Indian mothers experience postpartum depression. The postpartum depression is characterized by persistent sadness, anxiety, emotional distress, sleep disturbances, loss of appetite, difficulty bonding with a newborn, and in severe cases, suicidal thoughts or thoughts of harming the infant. Despite its high prevalence, India does not maintain a comprehensive national database on postpartum depression, making it difficult to estimate the true burden and formulate targeted interventions. The World Health Organization has consistently recognized mental health as a critical component of maternal and child health care. The untreated postpartum depression can also lead to poor infant nutrition, reduced breastfeeding, and impaired cognitive and emotional development of the child and increased health care costs. I therefore urge the government to introduce a dedicated national maternal mental health strategy with addressing postpartum depression as a key priority with focus on universal screening for postpartum depression during pre-delivery and post-delivery visits, especially using the public health infrastructures. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री विनोद श्रीधर तावड़े। धन्यवाद जी। ये ऐसा मुद्दा है जो मेरी माताजी विजयाश्री तावड़े के निधन के समय हमको ध्यान में आई। मैं सरकार का ध्यान भारत में स्किन डोनेशन और स्किन बैंकिंग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। शरीर का बड़ा भाग जल जाने पर उपचार के लिए दान की गई स्किन अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह संक्रमण तथा शरीर से द्रव के नुकसान को कम करने में सहायक होती है। जबकि स्थायी उपचार संभव न हो सके, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट थोटा 1994 के अंतर्गत स्किन डोनेशन की व्यवस्था है। सरकार ने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अंग एवं टिश्यू डोनेशन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक सराहनीय पहले की है। अब स्किन डोनेशन के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने, स्किन बैंकिंग की अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा एकीकृत राष्ट्रीय स्किन रिट्रीवल मैकेनिज्म विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे आवश्यकता वाले मरीजों को समय पर दान की गई स्किन उपलब्ध हो सके। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर
स्किन का दान किया जा सकता है। इसमें ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल स्किन की ऊपरी परत ली जाती है जिससे शरीर की बाहरी बनावट प्रभावित नहीं होती तथा इसे 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नोटो के अंतर्गत एक व्यापक स्किन डोनेशन फ्रेमवर्क विकसित किया जाए, स्किन बैंकिंग की अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए, एकीकृत स्किन रिट्रीवल एवं ट्रांसपोर्ट नेटवर्क स्थापित किया जाए, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाया जाए तथा राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि स्किन प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सामिक भट्टाचार्य। Allowing me. My subject is need for a national conservation action plan for fishing cat and protection of its wetland habitats. I seek to draw attention of the government to the alarming and recurring death of fishing cat, locally known as Mecho Bedal, across the wetlands of West Bengal. Incidents of these animals are being killed in road accidents, retaliatory attacks and habitat destruction are being reported with disturbing regularity. The fishing cat is a state animal of West Bengal, a Schedule 1 species under the Wildlife Protection Act 1972 and classified as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature. Yet it remains among the most persecuted wild cats in the country. Studies have reported the highest fishing cat mortality in India from Howrah district with 77 incidents in decade, while secures estimate around 70 deaths from the road accidents along in recent years as expanding highway networks fragment its habitat. Research further indicates a 44% decline in suitable habitat with a corresponding rise in human-animal conflict. The species survives largely outside protected areas in the marshes of Howrah and Hooghly and East Kolkata wetlands, which are being rapidly lost to encroachment. Aquaculture conservation and unplanned development, often misidentified as a tiger cub, owing of its stripes, it faces retaliatory killings despite no documented attack on humans. I urge upon the government to formulate a national fishing cat conservation action plan, notify key wetland habitats under the Wetlands Conservation and Measurement Rules 2017, install road accident mitigation measures to accident-prone stretches, and support community-based conservation and compensation mechanism so that the Bengal state animal does not vanish from its homeland. धन्यवाद। श्री इमरान प्रतापगढ़ी। श्री संजय सेठ। सरकार से उत्तर प्रदेश के लिए उन्नाव, पुरवा, मोरावा, लखनऊ रेलवे लाइन की मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम कर रही है। आज देश के कोने कोने में नई पटरियां बिछ रही हैं और भारतीय रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। इसी शानदार विकास यात्रा के संदर्भ में मैं आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले, विशेषकर मोरावा पुरवा क्षेत्र की एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण मांग को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। ये मांग उन्नाव, पुरवा, मोरावा, लखनऊ नई रेलवे लाइन के निर्माण की है। साल 2012-13 के रेलवे बजट में इस लाइन के सर्वे को मंजूरी मिली थी। यूपीए सरकार के रेलवे मंत्री ने 2013 में लिखित आश्वासन भी दिया था
कि दिसंबर 2013 तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे पूरा भी हुआ, लेकिन निर्माण के काम शुरू नहीं हुआ। आज भी मोरावा, पुरवा और आसपास के लाखों गरीब ग्रामीण नागरिकों, छात्रों और व्यापारियों को लखनऊ और उन्नाव मुख्यालय तक आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस रेल लाइन के निर्माण से स्थानीय किसानों को अपनी कृषि उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में अत्यंत आसानी होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए मार्ग खुलेंगे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि अटकी पड़ी इस महत्वपूर्ण उन्नाव, पुरवा, मोरावा, लखनऊ रेलवे लाइन का तुरंत संज्ञान ले। क्षेत्र के आर्थिक विकास और जनहित को देखते हुए इसके निर्माण के लिए जल्द से जल्द बजट आवंटित कर कार्य आरंभ किया जाए, ताकि जनता का एक दशक पुराना सपना हमारी सरकार में सच हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संजय कुमार झा जी। उपसभापति महोदय, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा नेशनल इंटरेस्ट का है। वो इसलिए है कि 1996 में जब यूपीए सरकार थी और गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, तो गुजराल डॉक्ट्रिन लेके आए। और गुजराल डॉक्ट्रिन ये था कि देश का सब कुछ इंटरेस्ट दे दीजिए और वो डॉक्ट्रिन का अपना पॉलिसी का प्रचार कीजिए। तो मैं भारत एवं बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में संपादित फरक्का वाटर ट्रीटी की वैधता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। इस संदर्भ में बिहार की दीर्घकालिक वाटर सिक्योरिटी, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एवं जल संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का समुचित समावेशन किए बिना इस ट्रीटी का रिन्यूअल राज्य के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा। फरक्का बराज का निर्माण कलकत्ता पोर्ट एवं हुगली रिवर में आवश्यक वाटर फ्लो के उद्देश्य से किया गया था। विगत दशकों के अनुभव है कि विशेषकर लीन पीरियड के दौरान बिहार को जल उपलब्धता में निरंतर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण बिहार के अनेक क्षेत्रों में ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। सिंचाई एवं ड्रिंकिंग वाटर की समस्या बढ़ रही है तथा राज्य को बार बार जल संकट का सामना करना पड़ता है। गंगा बेसिन पर आश्रित बिहार के कृषि, पेयजल, औद्योगिक विकास एवं भावी वाटर सिक्योरिटी के लिए गंगा जल की पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2050 के आवश्यकताओं का आकलन कर 2000 क्यूसेक अतिरिक्त जल की किया गया है, जबकि प्रस्ताव में इससे काफ़ी कम मात्रा का प्रावधान है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए। दोबारा इंडिया बांग्लादेश का ये फरक्का ट्रीटी दोबारा रिन्यूअल न हो, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसके स्थान पर बिहार सहित सभी बेसिन स्टेट्स की जल आवश्यकताओं का साइंटिफिक आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। जब तक बिहार की जल सुरक्षा, कृषि, पेयजल तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की पर्याप्त गारंटी सुनिश्चित न हो, तब तक ट्रीटी का रिन्यूअल बिहार के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं है कि बिहार के दीर्घकालिक हितों, विकास की संभावनाओं तथा करोड़ों लोगों के आजीविका के प्रतिकूल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री शंभू शरण पटेल। आपका बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय। आपने मुझे स्पेशल मेंशन में एक महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। महोदय, मेरा आज का सब्जेक्ट है डिमांड फॉर ए न्यू ट्रेन फ्रॉम पटना टू डाल्टनगंज। महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों के कार्यकाल में रेल क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। अभी पटना से डाल्टनगंज के लिए सिर्फ एक ट्रेन प्लामू एक्सप्रेस चलती है, जो कि पटना में रात्रि में खुल के सुबह बरका खाना तक पहुंचती है, और झारखंड के प्रमुख जिले गढ़वा, पलामू, लातेहार, पतरातू, रामगढ़ आदि जिलों में रहने वाले हजारों लोगों को इसका लाभ मिलता है। महोदय,
इसलिए मेरा सरकार से आग्रह होगा कि पटना से बड़काकाना के लिए एक वंदे भारत ट्रेन भाया जहानाबाद, गया, डेरी ऑन सोन, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, लातेहार, मैकलुस्कीगंज, पतरातू होते हुए बड़काकाना तक चलाया जाए, जिससे झारखंड और बिहार में रह रहे लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को इसका बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामजीलाल जी सुमन, श्री संजय राउत, श्री रवंगवरा नारजारी। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उत्थापन करने के लिए मुझे मौका दिया। सर, माय सब्जेक्ट इज नीड टू इंक्लूड कोकराझार, द कैपिटल बोडोलैंड, इन द स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India, the Government of India had launched the Smart City Mission. This mission has drastically improved cities across India through smart technology, sustainable solutions, and active community involvement. The capital city of Bodoland Territorial Region, Kokrajhar, has been and survived through the vicissitudes of time, unrest, conflicts, and violence in the past. Today, peace is prevailed, and it is the occasion to rebuild the lives, hopes, and dreams of Kokrajhar in peace times. It houses the Bodoland Territorial Council Legislative Assembly Building, the BTC Secretariat, the Bodoland University, Kokrajhar University, the Central Institute of Technology, the Benesar Brahma Engineering College, Kokrajhar Medical College and Hospital, the Bodoland Administrative Staff College, a number of colleges, schools, health institutions, and business enterprises and houses. Kokrajhar holds a strategic location as it is the gateway to this northeast India. There is a NTPC to the east and Tulungapuri Debodopa Memorial Park at Dotoma to the west. The Rupsi Airport is located at a distance of 20 kilometers to the southwest, and to the north is the upcoming Mindfulness City at Gelepu in Bhutan, connected by railway from Kokrajhar. Therefore, sir, I request the government to include the Kokrajhar, the capital of Bodoland, in the Smart City Mission. This will address long-pending development gap and improve the ease of living, infrastructure for education, health, sports, communication, public safety, recreational facilities, mobility, smart sewage system, and water supply, etc. of Kokrajhar. Thank you, sir. धन्यवाद। डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं हमारे राष्ट्र के युवा शक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहा हूं। My subject is need for a national policy and research mission on sexual, reproductive and behavioral health. India is one of the youngest countries in the world, and achieving the vision of Vikasit Bharat 2047 requires our youth to be physically, mentally and socially healthy. The World Health Organization recognizes sexual, reproductive and behavioral health as an essential part of overall well-being. However, many young people today are facing infertility, hormonal disorders, sexually transmitted infections, mental and marital health issues, and widespread misinformations on digital platforms. Due to inadequate awareness and access to scientific guidance, many fall prey to unproven treatments, adversely affecting their health and quality of life. I therefore humbly urge the government to consider the following measures. First of all, establish a national sexual, reproductive and behavioral health research mission under ICMR to promote scientific research, multidisciplinary collaboration and evidence-based policy making. Number two, formulate a national sexual, reproductive and behavioral health policy to strengthen coordinated, accessible and evidence-based healthcare services in line with public health needs. Introduce postgraduate courses in sexual medicine and psychosexual counseling in medical colleges to develop a pool of trained and compassionate specialists. Establish confidential sexual health clinics in every district hospital integrated with telemedicine to provide dignified, confidential and specialist care, particularly
in rural areas. Number 5, promote a national research on infertility, hormonal disorders, sexually transmitted infections, behavioral health, and digital age health risks to strengthen prevention, early diagnosis, treatment, and evidence-based public health policies. Number 6, establish centers of excellence for research, training, and specialized care to strengthen sexual, reproductive, and behavioral health services across the country. Thank you very much, Honorable Sabhapati Mohoday. धन्यवाद डॉक्टर साहब. श्री कणाद पुरकायस्थ. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on the subject, demand for establishment of a science research institute at Sribhumi, Assam. I seek to draw attention of the government towards the need for establishing a science research institute at Sribhumi, Assam, under the Ministry of Science and Technology. Sribhumi, located in the Barak Valley of the southern Assam, is blessed with rich biodiversity, diverse ecosystems, abundant natural resources, and immense human resource potential for scientific research in environmental science, biodiversity conservation, sustainable agriculture, climatic resilience, renewable energy, and biotechnology. Despite these advantages, the region lacks a premier national-level science research institution. As a result, many talented students and young researchers are migrate to other parts of the country in search of quality research opportunities. Establishing such an institute would unlock the scientific potential of the region, promote innovation, generate skilled employment, encourage entrepreneurship, and foster collaboration with universities and industries. It would also enable research-based solutions to the unique developmental and ecological challenges of the Northeast. Sir, this initiative would significantly strengthen India's scientific ecosystem in this strategically important region and contribute meaningfully to the vision of Viksit Bharat at 2047. It would inspire the youth of the Barak Valley and provide them access to world-class research facilities closer to home. I therefore earnestly urge the government to initiate a feasibility study for the establishing a science research institute at Sribhumi, Assam. This will be a transformative investment in science, innovation, and future of the Northeast. Thank you, sir. धन्यवाद. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 7th August 2026. धन्यवाद. And then we had our Indian anthem there. It really made us all very proud. So thank you, Sindhu, for all.